Hey everyone, Namaskar. कैसा काय म्हणताय सगळे? CMA Foundation exams have been completed for December 23 term. The papers were good. The students were confident about the papers. We all HGPA faculties were there across Pune centers, and the reviews which we got from the students were good. They were confident about the paper, especially the first session. Law and accounts all were very happy. They came out with smiling faces, and this gave them the boost, the confidence for the second session. So I hope wherever you are across India, your papers were good. Okay, now it all comes down to this. Sir, iske answers kya hai? What are the answers to this? So that's what we have decided now. We'll be putting up 4 videos. It's very simple, 4 subjects. Starting with law, business communication, accounts will come, maths will come, naming economics will come. You can check your answers by yourself, okay? And also at the end of this video, you'll be getting some information on CMA Intermediate, okay? So if you are a CMA student, if you haven't subscribed to this channel, please do subscribe and you'll get tons of notifications about Inter and Final for you, okay? Chalo, without wasting any further time, let us start with this question, okay? It was a pretty straightforward paper. If you have studied this much also, you could have cracked law very easily, okay? First question, what are the sources of law? Constitution of India, then again Constitution of India, judicial precedents, your verdicts, your customary statutes ordinance, enacted by parliament and religion. So the answer is pretty simple. Why? Because when you say sources of law, everything comes in that. Your customs come, your enactments come, your precedents come. So your answer is B. Next, what kind of structure does Indian Constitution have? So see, remember one thing, Indian Constitution is not only based on democratic, it's based on both. We have a federal structure, okay? It's federal having unitary features. So your answer is what? Federal, okay? Under which article can we amend the provisions? There was one specific, in fact, when we discussed in the class also, we have discussed this specific article. It was the article 368, which is the amendment article. This was a very tricky question. Like, mention number of judges in the Supreme Court of India, including Chief Justice of India. So remember one thing, the judges are 33, but if you include the Chief Justice, it will come down to 34. So your answer has to be 34 in this, okay? Chalo. Which is the highest civil court in a district? Very straightforward answer. It is obviously the district court. Next, while obtaining the consent of the promisee, keeping silence for the promisor when you had the duty to speak about material facts amounts to consent obtained by. Remember one thing, fraud, I'll tell you also. So section 70 of Indian contract, see, where there's a duty to speak, there was something called as uber me fide. So utmost good faith. There are some instances where you need to speak. You have to tell the truth. Insurance for that matter, marriage for that matter. So in this case, if you keep silence, it will amount to what? Fraud. As per section 70 of Indian Contract Act. Chalo. Next, consider the following. So even this was based on that only, on fraud. Active concealment of fraud. What is conceal? Conceal मतलब कुछ छुपाना, कहीं लपोने. That is conceal. Promise made without any intention of performing it. Breach of duty which gains an advantage to the person committing it. That comes under misrepresentation for your information. Inducing mistake as to subject, that comes under mistake. Okay. So फक्त तुमच्या माहितीसाठी, just for your information, जो लोग मेरे पास सीखे उनको पता है 15, 16, 17, 18, 19, 20. So what is this? These are sections, okay? So this was what? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake was over here. 19 was what? Voidable contract. Question क्या पूछा गया देखो कि which of the above thing amounts to what? Fraud. इसमें से कौन सा fraud है? Sir, ये तो confirm fraud है, confirm. Active concealment. If you are hiding something which you had to tell, that's a fraud, 100%. So one answer is confirmed. Next, promise made without any intention of performing it. Yes, even this is fraud. I am telling a lot of things but did not perform it. That will amount to fraud only. So even this is fraud. Ladies and gentlemen, this and this is not fraud. I've just told you. This amounts to what? Misrepresentation. This comes under section number what? 18. And this is what? Mistake. So what is your answer? Ladies and gentlemen, the answer is what? 1 and 2. I hope you've got that right, huh? Chalo, next. A master asks his servant to sell his cycle to him at less than market price. This contract can be avoided by the servant on grounds of what? See, whenever there's a relationship where there's a pressure, mental pressure, obviously the answer is only one. What? Undue influence. Section number 16, okay? This was very simple. Indian Contract Act, the term consensus that either means what? Meeting of minds.
So it is nothing but what? Parties agreeing upon the same thing in the same sense. So I'm discussing the answers. So I can explain you all this stuff also, but I don't think you will be in the mood to like sir just answer batao khatam karo. So consensus at idem का मतलब क्या है? So basically if I want to sell a car to you, I have 5 cars and in my mind there is like I have to sell you a 5th car and you are thinking no sir is going to send me sell me a car, but in your mind the first car. Tell me one thing, are we on the same page? Are our minds meeting? The answer is no. So what is your consensus at idem? Meeting of minds. Okay, so the answer was C. A finder of goods. Beautiful question. A file to sue to recover expenses voluntarily incurred. Sell the goods if he likes. Can sue for the reward if any or both A and B. Finder of goods. You might like if you have said like sat in my class. We had discussed about the example of diamond. So if you get a diamond outside like walking somewhere, tell me one thing, you are the finder. What does the law tell? Law telling the Baba you will act as a bailey. You will hold the diamond. If you are seeing this question, you might get confused for 1 minute. You might think, sir, I can also go for the first option also. File a suit to recover the expenses. What incurred? What incurred? Voluntary incurred. Ajay, tell me one thing. Can you sell the goods if he likes? No, Baba, you cannot sell it. You have got the diamond. Yes, you are the bailey, but not the owner. You will become the owner after some conditions are able to fulfill. For example, if the main guy, if the main owner is not being able to find out, 3-4 महीना हो गया, you are going, you are like putting advertisement everywhere, you are searching for him, still he is not be able to trace. हाँ, then you can sell it. मग तुम्ही ते विकू शकता. अभी तुम कुछ कर सकते हो क्या? No. So this option goes outside the window. This one is gone. Now you tell me, sir, but this is तो okay ना? जो खर्चा मैंने किया है वो तो मैं कर सकता ना उससे रिकवर. अरे remember one thing, expenses you can do that only which are there to protect that thing. But can you go for the third one? अगर उसने कुछ इनाम बोला है कि जो भी कोई मेरा डायमंड वापस आके देगा मैं उसको इनाम दूंगा. Can you sue on this? Yes, 100%. So the answer is what? The answer is this. The answer was sorry. The answer is C. Can sue for a reward. You might think this is the answer both A and B, but no. This he cannot do. Absolutely not. Okay. That is he. What is the answer? Both A and B. So this and this no. The answer is what? The answer is C. You can sue for a reward if there is a reward if any. Okay. Next. Quasi contracts or implied contracts are exceptional kinds of contracts by which. So what is now quasi contract? So quasi contract का मतलब क्या था? It resembles a contract. Law will tell you कि बाबा there's a contract between you है ना, आपने सच में कुछ contract किया क्या? नहीं. So what is the answer in the C? One party is bound to pay the money in consideration of something done or suffered by the other party. There is no contractual relation exists between the parties. No contract has been made by the parties. अरे all of it are right only. There is no contract within the parties only, but law is telling you. You boss आपको करना पड़ेगा. अरे simple example. If you take the benefit of something for which you have not paid, but you tell me one thing, तुम्हाला पे करावं लागेल का? तुम्ही दुसऱ्याचं काहीतरी खाणं खाल्लं, you have had something, तुमने फूड ऑर्डर नहीं किया था, दूसरे ने ऑर्डर किया था, वो गलती से तुम्हारे पास आ गया, तुमने खा भी लिया उसको, तो लॉ क्या बोलता है? भाई तुमने खाया ना अभी, उसको पैसा तो सामने देखो. So what is this? Is there a contract between two people? No. But do you have the obligation to pay? Yes. So cause and contract का आंसर वो है. When both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to an agreement, the agreement is very simple. The moment it is a mistake, it will be what? Void. बाकी सब कुछ avoidable में आता है. Your coercion, you under influence, fraud and misrepresentation. Next, a person contracted to deliver a part of specific crop of potatoes. The potatoes were destroyed by fungus, like by natural stuff. Though no fault of the party, the contract is void due to frustration of contract. Tell me one thing, this is a natural phenomena यार. उसका कुछ गलती है क्या? फंगस उसने जानबूझ के किया क्या? लिखा है कि उसने ऐसा वहां पे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया. A borrows from B ₹500 to bet with C. मतलब मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने सट्टा लगाया वहां पे. तो tell me one thing, can B recover the amount of this loan? No बाबा. How is this legal? तो आंसर what? तो आपको तो ये आंसर देखना भी नहीं चाहिए सीएस वाला, तो पहले से बाहर गया. तो बच्चे दो, agreement is voidable? No, the agreement is wagering agreement and falls under section what? 23, and hence it is void. Hence it is void. Next, if a proposal has been accepted subject to certain conditions, then see. So tell me one thing. See, what is proposal? Offer, यार, offer. So एक offer is accepted, but कुछ conditions है. Accept हुआ है, तो मुझे बताइए valid है क्या? Yes, it is valid only. The contract is valid and conditions are what? Binding.
आपने ऑफर एक्सेप्ट किया बट आपने कंडीशंस भी डाले, कंडीशन भी एक्सेप्ट हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट सब्जेक्ट टू व्हाट, दैट कंडीशंस। नेक्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट ना, ये जो आपको दिख रहा है वो कंसीडरेशन के ऊपर है, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज डी, समथिंग इन रिटन वाला। सी सो इन कंसीडरेशन आप एक्शन आपका माना जाता है कंसीडरेशन, abstinence, what is abstinence? To abstain from doing something, not to do something, even that is consideration, and promise भी क्या है, consideration है। So your answer is this, act, abstinence and promise। The validity of a contract is not affected by one more tricky question, few people might have got confused over here था सर, इसका आंसर हमको ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ रहेगा, आंसर इज राइट। सी व्हाई कैन यू टेक एक्सक्यूज ऑफ इंडियन लॉ? नहीं, मुझे आई एम अ इंडियन सिटीजन एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट इज इंडियन लॉ, नो नो नो, दिस एक्सक्यूज यू कैन नॉट टेक। कैन यू टेक एक्सक्यूज ऑफ फॉरेन लॉ? हाँ, दैट इज ओके, फॉरेन लॉ पता नहीं है, हम समझ सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो, बट इस पे थोड़ी कर सकते हो यार इंडियन लॉ पे। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। इन वेजरिंग एग्रीमेंट सट्टा both the parties win, possible है कह रहे, both the parties lose, possible है क्या, none of the party wins, yeah, one party wins and other loses, this is your answer। Which of the following is correct? The proposal when accepted becomes a promise, valid contract cannot result from identical offers, beautiful, you know what is that, that is cross offer। आपका A वाला भी बराबर है, proposal when accepted becomes a promise, yes, 2 clause B basically, valid contract cannot result from identical offers, yes, a cross offer is not an offer, दोनों तरीके से ऑफर आ रहे हैं ना बॉस। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्ट, अगर आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, तो ये आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस अंडर व्हिच एन एम्प्लॉय अग्रीज दैट ही विल सर्व अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन एंड ही विल नॉट सर्व एनीबॉडी एल्स। एक बंदा काम कर रहा है इसके लिए और उसने बोला उसको कि कोई बात है, मैं 2 साल के लिए मैं आपके लिए काम करूंगा, आई विल नॉट वर्क फॉर एनी। इसने हाँ बोला है, उसने हाँ बोला, उसने कुछ प्रेशर नहीं डाला है, तो ये इसमें से कौन सा हो गया, इसमें से ये वैलिड एग्रीमेंट ही है, इट्स अ वैलिड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होने वाला है, व्हाट इज दिस, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू हैव गॉट द आंसर्स अप टिल नाउ, कि आप सब लाइक आपके आंसर्स मैच भी हो रहे हैं। सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर्पज टू इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज अग्रीमेंट टू सेल। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट, in case of appropriation of goods, what is the meaning of appropriation? अरे selection of goods, select करके साइड में रखना। which are the essential requirements? the goods should conform to the description quality। अगर मुझे कुछ एक बड़े बंडल में से, कुछ बड़े लॉट में से कुछ चीजें अप्रोप्रिएट करनी है, you tell me one thing, इसमें पहला तो बराबर होगा, yes sir this is right, the goods must be in a deliverable state, it has to go to the other party in a deliverable state, appropriation must be by the seller with the assent of the buyer, ये सब कुछ आता है इसमें, किसमें, all of the above, everything comes under there। when a seller can stop the goods in transit, so ये आपको अनपेड सेल के बारे में पूछा था, तो एक आपके 2 राइट थे, एक था आपका राइट ऑफ लीन और दूसरा था गुड्स इन ट्रांजिट वाला, स्टॉपेज वाला, ठीक है। सो मुझे बताओ, ये आपको ट्रांजिट वाला पूछा है, सो आप कब रुका सकते हो, सो पहले इसका आंसर डिस्कस करता हूं मैं। तो अगर आपका राइट ऑफ लीन हाथ से निकल गया, देयर इज नो राइट ऑफ लीन, तो राइट ऑफ स्टॉपिंग इन ट्रांजिट आपके हाथ में आएगा, दैट इज वन। सेकंड, अगर वो इंसॉल्वेंट बन जाता है आपका बायर, तो इसमें देखो क्या क्या है, when the buyer of the goods informed that he will make payment after some time, no, seller has no right to stop the goods in transit, no, where the buyer of goods becomes insolvent and goods are in transit, yes this is the answer, and when the buyer informed that he is not now in the goods, no, C is your proper answer, 24 का 25। अरे even this was very good, this was a very good question। in case of contract for the sale of specific or a certain goods, sir आपके चार्ट में existing, फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट, एग्जिस्टिंग में क्या क्या गुड्स आते थे आपके, स्पेसिफिक आते थे, असर्टन आते थे और अनअसर्टन आते थे, बराबर। अभी क्या पूछा उन लोगों ने, द सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टन गुड्स, जो आपने साइड में सिलेक्ट करके रखे हैं, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर। अरे जब भी आपका जी चाहे, व्हेनेवर यू फील लाइक, एट सच टाइम एज द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड, साइड में तो निकाल के रखे हैं, जब भी आपको चाहिए आप लेके जाओ। सो दिस इज योर आंसर 25th ए का, 25th A। Next, the contract of sale may provide for, I hope this is visible, no? The contract of sale may provide for, what is contract of sale? अभी के अभी, agreement to sell कब होता है, बाद में होता है। Contract for sale may provide for immediate payment for price, yes,
द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट और दैट डिलीवरी पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड, ये भी हो सकता है। द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इसमें से सब कुछ हो सकता है चारों। In contract of sale of goods, the seller is under no obligation to point out the defects in his own goods. This doctrine is called as what? It's सबसे easy होता है, I think. Caveat emptor, let the buyer beware. I am not under any obligation to tell you anything that defects in my goods. Unless there's some condition to it, but ये basic आपका रूल था. Let the buyer beware. Side सामने सब कुछ रखा है, आप आओ, चेक करो, टेस्ट ड्राइव लो, आपको जो करने का करो, मैं उसकी जो भी कमी है वो आपको नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या था? Caveat emptor. सेल ऑफ गुड एक्ट डिफाइंस बायर, ये आपका सबसे फर्स्ट पैराग्राफ था। बायर का मतलब क्या है? जो कौन बाय नहीं करता, जो बाय करता है, जो अग्री करता है वो बाय करने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। पर्सन हु बाइज अग्रीज, ये पहले वाला, ये फर्स्ट वाला, बाइज आल्सो एंड व्हाट? अग्रीज आल्सो। वन सेकंड, ये वाला पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स, इसमें सर्विस भी लिखा है नहीं, इज ओनली व्हाट? गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट? मूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स। तो आपका आंसर क्या है? पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स। 29, कैन यू आइडेंटिफाई एनी ऑड मैन? ये तो बहुत सिंपल है, चार्ट मैंने जो आपको बताया अभी। तो स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन, इसमें क्या नहीं आता है? फ्यूचर। ये फ्यूचर और कॉन्टिजेंट का अलग कैटेगरी है। नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब अगर आपका कुछ अलग कंडीशन होगा तो ठीक है, बट व्हाट इज द जनरल रूल? डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस। अरे एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, खत्म हो गया बात। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर मुझे आपको ये मेरा बॉटल बेचना है तो पैसा तो दो, दिस हैज टू बी व्हाट? कॉन्करेंट कंडीशंस। तो ये यहाँ का आंसर है। देखो और क्या क्या लिखा है? फर्स्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स देन पेमेंट ऑफ प्राइस, नहीं, वो एक साथ होना चाहिए। फर्स्ट पेमेंट ऑफ प्राइस देन डिलीवरी गुड्स एंड नो पेमेंट ओनली, वो तो आंसर है ही नहीं। और कॉर्पोरेशन कैन बी अ पार्टी, अगर आप चेक भी करोगे इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो पहले आपका सोर्सेस का पूछा, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर किस पर अभी पूछ रहे हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद वो शुरू करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपका लास्ट पार्ट है। और कॉर्पोरेशन कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट if it is authorized by the article of association, special permission is taken from board of directors, कुछ गरज नहीं है उसका, SR is passed, is absolutely without any restriction। So आप obviously एक कॉर्पोरेशन बन सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी पार्टी, ड्रॉई फॉर दैट मैटर, ओके, बट द ओनली पॉइंट इज व्हाट? वो आपके रूल्स के हिसाब से चाहिए, और रूल्स कहां से आने वाले हैं? अगर आपके आर्टिकल से उसको ऑथराइज किया तो। When a check is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall not pay otherwise than to a banker, बराबर है, shall not pay otherwise than to the holder, shall not pay, अपन क्रॉस क्यों करते रहे? फॉर प्रोटेक्शन, राइट? सो द बैंकर को एक ही है, अगर क्रॉस किया जनरली, it shall not pay otherwise than to a banker, that's your final answer। Dash is an instrument in writing contain an unconditional order, अरे आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, प्रॉमिस नोट अगर रहेगा तो आप प्रॉमिस करते हो, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में आप क्या करते हो? एक ड्रॉवर ड्रॉई को क्या करता है? ऑर्डर देता है। तो इसका आंसर क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं होता है, इट इज ऑन डिमांड, इट इज ऑन डिमांड। जनरली द मेकर ऑफ द चेक मेक्स द क्रॉसिंग इफ इट डज नॉट, बहुत इजी था, अगर मैंने चेक निकाला है, अगर मैं क्रॉस नहीं करता, क्या आप क्रॉस कर सकते हो? क्या बैंक क्रॉस कर सकता है? यस, एनीबॉडी कैन क्रॉस। अरे क्रॉसिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, अगर मैंने भी नहीं किया वो आप भी कर सकते हो। तो इसका आंसर होल्डर ऑफ द चेक कैन क्रॉस इट, ठीक है, इन सर्टेन ओकेजन इवन द बैंक कैन क्रॉस इट, तो बोथ ए एंड बी कैन क्रॉस। द आंसर इज दिस। If an instrument may be construed either as a promissory note or bill of exchange, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ाई करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंफ्यूजन होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है कि आपका प्रॉमिसरी नोट है। अगर ऐसा है तो उसको एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और जैसा आपका जी चाहे आप उसको क्या कर ट्रीट कर सकते हो। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग। तो उसका आंसर क्या है? एम्बिगुअस। द पार्टी विच इज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड टू हुम द ऑर्डर टू पे इज मेड इज कॉल्ड, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक इन द होल पेपर। तो क्या मत कर रहे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, तो जिसके ऊपर जिसको बोला गया उसको क्या बोलते हैं? हम उसको ड्रॉई बोलते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक अफेक्ट्स द, अरे क्रॉसिंग से मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है? क्या मोड ऑफ पेमेंट अफेक्ट होगा? क्या आपको ऑन ओवर द काउंटर पेमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नेगोशिएबिलिटी, या अगर अपन लिख सकते हो उसमें नॉट नेगोशिएबल, तो यस द आंसर इज व्हाट? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर द अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन वर्ड्स एंड फिगर्स, कभी कभी ऐसा होता है चेक पे भी होता है यार, अगर वर्ड्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ अगर फिगर्स में आपको गड़बड़ लग रहा है, तो कौन सा आपको लेना पड़ता है? एंड द आंसर इज व्हाट? इट ऑब्वियसली वर्ड्स, अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स। अगर फिगर्स और वर्ड्स में कुछ गड़बड़ है, आप वर्ड्स को आगे लेके ही जाओगे, तो अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एंड नॉट द फिगर्स। अ चेक इज अ, सबसे इजी, आपके पहला आपका प्रॉमिसरी नोट था, फिर आपका ये सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6,
और जो आपका सेक्शन 6 था चेक का, उसका फर्स्ट लाइन ही क्या था, अ चेक इज अ डैश, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स है वही चेक को लगते हैं एंड थोड़ा और भी लगते हैं, बट अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके आपका ये शुरू होता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑफ डिमांड। नहीं, अरे क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस तभी आपको मिलेगा जब क्या है, अरे ऑन डिमांड है। दैट्स द आंसर। स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन कॉल्ड व्हाट, किनेसिक्स, ये इसका आंसर था। द यूज ऑफ, ये बहुत इजी आपके ये थे, द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन इज अ वन टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, हैप्टिक्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटैक्स कम्स अंडर व्हिच सी ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो बहुत इजी था। आप ग्रामर और सिंटैक्स कौन से 7 सी में से इस्तेमाल करोगे, किसमें, ये करेक्टनेस में आपका ग्रामर और सिंटैक्स करेक्ट चाहिए। इफ अ मैसेज इज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ब्रीफ हो सकता है, कंसाइज हो सकता है, तो इसमें दिया इन लोगों ने कंसाइज। Affirming comments with regard to future behavior is called as what? A positive feed forward. A positive feed forward. Okay. That's the first step in identifying information. आपका सबसे पहला ये क्या होता है स्टेप इन इसमें, लाइक सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट, इसमें होता है एनकोडिंग होता है, वो सब बाद में होता है। तो सबसे पहले क्या है, आइडिया डेवलप होना चाहिए, सबसे पहले वो है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। एट विच स्टेज द कम्युनिकेटर फोकस ऑन करेक्टिंग द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। तो मुझे बताओ, प्रूफ रीडिंग वो तो बाद में होता है यार। रिवाइजिंग एंड एडिटिंग में मैं क्या करूंगा, कुछ बाबा करेक्शन कुछ गड़बड़ है क्या, मैं उसमें चेक करूंगा। प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड्स बिहेव इन अ डैश इन द वर्कप्लेस, ऑब्वियसली इन व्हाट, अ पॉजिटिव वर्कप्लेस। एंड मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बिलोंग टू टू डिस्टिंक्ट कल्चरल बैकग्राउंड्स। एक लेटर से, एक साउथ इंडियन है, एक पंजाबी है, और मिस्टर बी बिलीव्स दैट हिज कल्चर इज सुपीरियर। वो क्या बोलता है, नहीं मेरा कल्चर तेरे से बहुत बड़ा है। इसी चीज को कॉमन क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म। ओके, आई होप यू हैव गॉट द आंसर्स। ओके, मेरे हिसाब से लॉ का पेपर इजी था। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट और यू नो वेयर यू कैन गेट फंबल। ओके, खूब इजी पेपर होता। हाँ, 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है, सो आई डोंट थिंक मच आपको कुछ लाइक तकलीफ, अगर आपने पढ़ाई किया रहेगा, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पेपर व्हिच लाइक एवरीवन इज हैप्पी आल्सो एट द एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, चलो मेरे और एक दो वीडियो आने वाले सीएम इंटर, बिकॉज अभी टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, बिकॉज अगर आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं सर मैं क्लियर हो तो सकता हूँ, आई एम ए पोजीशन आई कैन क्लियर, रिमेंबर वन थिंग, मेरा एक वीडियो अभी आएगा, आई थिंक टुडे ओनली इट विल कम आउट। सो आपको अभी करना क्या, व्हाट एग्जैक्टली शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन 2024 का, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगर आप सीएमए फाउंडेशन का आंसर दिया है। तो अभी जस्ट आपको ये बोल देता हूँ, जून 2024 में आपका एक ग्रुप रहेगा, एंड उसके बाद आपका दिसंबर 2024 में आपका सेकंड ग्रुप। दिस शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन। आपका सीएमए इंटरमीडिएट 2024 में खत्म होना चाहिए। ओके, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। और रही बात रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स विल कम आउट वेरी सून, इट्स एमसीक्यू पेपर, आई थिंक 2 वीक्स मैक्स, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जैन आपका आना चाहिए। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम लोग सीएमए इंटर एचजीपीए में शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज स्टार्टिंग ऑन द 2nd of January। सर 2nd of January से बैच शुरू हो रहा है क्या, नहीं, 2nd of January से आपके डेमो लेक्चर शुरू हो रहे हैं, दोनों ग्रुप के लिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए। अगर आपका गोल है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लेके आने का है, वी हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक्स ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इसमें वी गॉट अ लॉट ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स। ओके, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको डेमो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, यू कैन जस्ट ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप पुणे या पीसीएमसी से हैं, आप जरूर ऑफलाइन अटेंड करिए प्लीज। आई वुड नॉट रिकमेंड इफ यू आर स्टेइंग इन पुणे एंड स्टिल कमिंग फॉर ऑनलाइन। हाँ, हैविंग सेड दिस, अगर आप पुणे से बाहर से हो या आउटसाइड महाराष्ट्र एंड यू वांट टू अटेंड, फॉर ऑल माय साउथ इंडियन पीपल आउट देयर, ओके, लेक्चर्स आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली। ओके, सो यू कैन attend very easily online live. There will be personal attention. I'm not just saying telling this for only saying it. There will be personal attention. I'm telling you again. And we've got exceptional results in CMA Inter and Finals. Okay. In fact, Pune and PCMC में हम लोग एक ही क्लास है जो ऑफलाइन कर रहे हैं CMA Finals के लिए. You can search us on YouTube also. And if you want the admission to this for the CMA Inter batch, which is starting on 2nd of Jan, you can simply WhatsApp or call on the number flashing on your screen. There will be 3 more videos coming now. आपके answers, your accounts, your maths and economics, and there will be one more entire detailed video कि अभी आपको करना क्या है. What exactly should be your plan of action? सर वो सब छोड़ो, पहले हम लोग मजे करेंगे. सर इतना दिन पढ़ाई किया है, अरे वो तो आपका हक है, वो तो राइट है आपका, अभी मजे करो. बट रिमेंबर वन थिंग, आपका सीएमए इंटर का प्रिपरेशन जल्दी शुरू करेंगे सो दैट आपका जून में आपका निकल जाएगा एक ग्रुप अगर आप बैठ रहे हो तो, एंड दिसंबर में आपका सेकंड निकल जाएगा. ठीक है, सो ऑल दैट थिंग कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब टू HGPA channel. You will get tons of information on CMA. We are the only classes providing CMA finals throughout whole of India. ऑफलाइन बोल रहा हूं मैं, ठीक है.
exclusively for CMA students. Okay, अगर पुणे PCMC को, so don't need to go further. 2nd Jan is the date for you for the CMA inter batch. Okay, thank you so much, and also subscribe to our channel. Stay tuned for the next videos on accounts, maths, and economics. Okay, best of luck. Have a great day.